nice to welcome him on stage. जब तक ये स्टेज पे ना आ जाए तालियां और शोर कंटिन्यू रहना चाहिए. Bring it on everyone. Come on, see. Come on, Stefano Sari. Come on, everyone. welcome all of you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Welcome to you all. Everybody, कोई हैं जो अपने फेवरेट स्टार्स का एक बार फिर से वेलकम करना चाहते हैं थोड़ी एनर्जी के साथ? थोड़ा इन्हें पता तो चले इनके कितने फैंस बैठे हुए हैं यहाँ पे. Can we give them a big round of applause? Last season, the team came very close, right? हम finalists थे last season. As a captain, how are you planning to build on the momentum to take the final step this year? See, we had a fantastic season, as everyone knows, and you have been reiterating the same lines. But it's important that we stay in the present, and this is a new season. It's a new start. We start from the bottom, zero, and we need to see to it that we build the same amount of synergy and the camaraderie which we had in the previous year. So this is the time we come together, we plan, plot things, and I'm glad that we've got a couple of days heading towards our first match. So, yes, I'm sure that the boys are in best shape and the mindset and the motivation level is pretty high. So, all I want to say is that the support and the love that the fans share throughout the season, I think that is going to be essential. And this is just the start of the journey. There's a long way to go and definitely looking forward for a brilliant one. We all are looking forward to it. Everybody, can we please have a huge round of applause? Thank you very much. The next question I would like to ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ. ਸੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੀ ਬੋਲਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਹਾਰਡ ਯਾਰਡਸ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਿਸ ਸੀਜ਼ਨ। आई थिंक श्रेयस ने क्लियरली आर्टिकुलेट किया कि जो हमने लास्ट ईयर किया था वो वहाँ रखा है, बट एक चीज़ जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आप शायद रूम में चारों तरफ देखेंगे, वो है हमारी टैगलाइन, बस जीतना है। दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन विच इज़ नॉट कमिंग जस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट और फ्रॉम द प्लेयर्स और कोचेज, इट इज़ कमिंग फ्रॉम एवरीवन इंक्लूडिंग मीडिया। अ लॉट ऑफ मीडिया पीपल वांटेड अस टू विन, एंड मोर देन दैट सबसे बड़ा श्रेय और काम जाता है फैंस के लिए, बिकॉज विदाउट देयर सपोर्ट we can't achieve that. So it's a collective manifestation that we want to win and we will put up a best show. How we doing it is clearly focusing on different aspects. क्रिकेट का काम तो क्रिकेट करेंगे, जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं वो करेंगे, बट जो हम कल्चर बिल्ड कर रहे हैं टीम का, हमारे सोशल मीडिया में वो कल्चर जा रहा है, और जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, that every step will get us closer to the big cup that we are trying to achieve. Thank you. थैंक यू सो मच। श्रेयस, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कई टीम्स की कैप्टनसी की है, कलकत्ता, दिल्ली, यू रिप्रेजेंट मेनी टीम्स। तो पंजाब का वो जो सरपंच आपको टैग दिया है, पंजाब दा सरपंच, तो वो टैग कितना स्पेशल है और वो फैन बेस कैसा आपको आउटकम दे रहा है, क्योंकि आप उन्हें अच्छा क्रिकेट खेल के दे रहे हो? सरपंच ये टैग मुझे लास्ट ईयर मिला था, और अभी जस्ट मैं बाहर बात कर रहा था किसी से, मैंने बोला कि ये सरपंच अभी मुझे पहले मिला तो मुझे पूछना पड़ा लोगों से कि क्या है एग्जैक्टली इसका मीनिंग।
जैसे कि अरिजीत को मैंने पूछा था लास्ट ईयर, बता अरिजीत क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कैसा इधर यूज करते हैं टर्म, तो फिर उसने बोला सरपंच जो हेड रहते हैं कम्युनिटी का उसको बोला जाता है, एंड देन इट ग्रू अप ऑन मी। ऐसा नहीं कि अचानक से मुझे वो पसंद आया, बट जैसे कि मैं रास्ते में भी जा रहा था लोग मुझे बुला रहे थे, और अभी लास्ट 1 साल हो गया आईपीएल खेल के, तो फिर सब लोग अभी जब भी मुझे मिलते हैं तो यही बुलाते हैं, तो एक तरीके से अच्छा भी फील होता है एंड मोटिवेट भी करता है मुझे कि अगले अभी ये सीजन में आया हूँ मैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो हाई रहेगा, एंड विच इज फन। आई लव द चैलेंज एज वेल। तो चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको अच्छा टीम भी चाहिए, और वो हमारे पास है। तो मुझे ये सब जब भी टैग मिला था, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, एंड दैट इज सेकेंडरी ऑनेस्टली। इम्पोर्टेंट इज दैट जब भी स्टेप इन करेंगे मैच में हमें जीतना है, जैसे कि इन्होंने कहा बस जीतना है, वो इम्पोर्टेंट है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵੈਲ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਚੈਲੰਜ ਫॉर ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, knowing their strategies, is it easy to play or is it difficult to play for both of you? ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕ ਸਪੌਟ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੋਲ ਸੋਚੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਜੋਕਸ ਅਸਾਈਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਕਮਸ ਫਸਟ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ 120% ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਵੀਕ ਸਪੌਟ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਚੀਜ਼। So I feel that usually when we go onto the field, when we are representing the country, we know how the opposite person is playing. But when we come back, there is a brief period where you get to work on yourself. So in that period, I feel players, they can tinker a bit in their अचानक से प्लान नहीं कर सकते हो कि इसके अगेंस्ट क्या करेंगे। I feel we have got a great team of analysts and support staff who work on all these aspects of the game. And once we get information right before the game, कि on a given day he's playing like this, तो तभी we chop and change a bit and उस हिसाब से भी adapt. Sorry. Injury issues aren't in our team at the moment. I'm not aware of any as of now, which... Yeah, that's what I know. How difficult was it to set the tone right again? See, I feel that it's always challenging to come after an injury. I'd lost around 7 kgs of weight after my injury. It was a severe one, but thankfully I was in a great shape after 2 months. I had to go through a few of the tests, which I did and I passed. But it took a lot of effort for me to gain those 7 kgs back. And I feel that, as I mentioned earlier, that I love challenges, and that was one of the challenges which I had to overcome. And I'm glad that I overcame that part of my life, and I'm back again sitting over here representing the respective team, and also represented India in the previous series as well. So I'm proud of myself. सो होम ग्राउंड पे इतना प्रेशर होता है। चंडीगढ़ में जब मैच होते हैं तो ज़्यादातर पंजाबी आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ तो जीतना। होम ग्राउंड में इतना प्रेशर होता है। वैसे तो देखो टीम को प्रेशर होता नहीं कुछ खास, एंड मेरे को भी पर्सनली श्रेयस भाई भी प्रेशर फील करते नहीं है, लेकिन जब भी इन्हें पता लगता है मुल्लापुर में मैच है तो तब थोड़ा प्रेशर फील होता है हमें, क्योंकि हमारा थोड़ा होम रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। लेकिन बड़ा मज़ा आता है जब इतनी सपोर्ट मिलती है क्राउड से, एंड आपको चीयर करते हैं लोग, आप भागना शुरू करते हैं, आपको पीछे से ऐसा लगता है कि 30,000 लोग आपके साथ भाग रहे हैं उस टाइम पे, एंड बहुत ही मज़ा आता है, ऐसे सपोर्ट मिलते रहे। एंड कोशिश करेंगे कि इस साल अपने सारे होम मैचेस जीते, एंड कैप्टन साहब यहाँ पे 3-4 सेंचुरीज भी लगाएं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। से ज़्यादा ये कहाँ पर आते हो? नहीं आइडिया काफ़ी स्पॉन्टेनियस होंदा है, रैंडम चीज़ कदे भी दिमाग च आ जांदी है ते ओह बनाई दी है। इदां कुछ प्लान नहीं हुंदा, ते बाकी मैं ज़्यादा डिटेल दे नहीं सकदा, मेरा सीक्रेट बाहर आ जाना।
ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ का काफी समय है तो उसी की नहीं कैरी का याद आस मोडरा दो इस बार जिसके आई की नहीं मैच हो रही हो पे देख पंपेबल तो के बाद ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਡੈਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਅਡੈਪਟ ਕਰੋ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੀਏ ਇੱਥੇ My question is to Sarabjit from your eye. Are you having a special eye on your team? That's a very intense question. CP plus का है हमारे में है मेरा है किस पे टीम पे Your eye on your team. हाँ हमारा है ट्रॉफी पे और इनके नाम में श्रेयस अय्यर है So that's what I'm asking. So do you have a special planning for your team to maintain the discipline and how to keep the morale, Yes, Ricky is going to come tomorrow. Then I'm sure that he must be having great set of plans along with him and the support staff who would be arriving along with them. It's important that we execute right things at right time. And as I mentioned earlier, you need to be humble and present, be in the moment and enjoy as much as possible because this is the period where we live as a family for 2 months. And the more time we spend together, the more we get to know each other and the better results you get eventually. Honestly speaking, none. Shreyas, I have a question for you. Your मैं अभी उसको अभी क्या 10 दिन है तो हाँ आई मीन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हैपेंस अ डे बिफोर or 2 days before. So the important aspect as of now is to get along, get to know the teammates, how they've been doing for a while, representing their own countries in different formats. Now is the time where we build that camaraderie, and come the game day, 2 days prior, that's when the planning starts. So camaraderie आप कैसे build करते हो? Just play the matches or are there any special gigs that you plan or something of that sort? So camaraderie happens majorly off the field when you spend time together. You play different games in the game room. You see, it's a beautiful, massive game room over here, and yeah, this is where we spend most of our time and get to know each other, play FIFA and different games which are here. And more importantly, we have a lot of privacy as well. So I think that will help us build that camaraderie and have a great season. So I heard you guys win at FIFA. Sorry? I hope you win at FIFA as well. उससे फर्क नहीं पड़ता. नहीं, मैं बोलने वाला था, don't hope. You should be sure that I win at FIFA. FIFA बोला ना आपने? You said FIFA, right? FIFA का hope है, tournament का certainty है. I like that. I like that. Thank you, sir. Okay. Ladies and gentlemen, what is that? It's years of you the either eating wala ke o journey either the last ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਹੋਮ ਟੀਮ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਲੋਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਟੀਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ but yes looking forward ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ Ash won the World Cup and you were. Can you please take us through the journey of the World Cup? Like there was slump in the team. You lost to South Africa. What was the, how was the experience over that? What were the discussions over the team management? I'd say it was a great tournament. It wasn't a slump. It was just a blip against South Africa and the type of talent and the skills we had in the team. We just had to play to our standards to get that result right. So I guess we played to our standards and the result is in front of your eyes.
I think they'd be more excited in listening to these two gentlemen here who are stars. Thank you, all of you, for coming this afternoon here. And thank you, CP Plus, our partner, our prime partner, our principal partner, whatever you want to call it. इनके साथ हम जुड़ चुके हैं. बहुत लंबी हमारी एसोसिएशन रहेगी. इनके आने से हमको और थोड़े दुआएं भी मिलेंगे क्योंकि इनके फेमस लाइन है ऊपर वाला सब देख रहा है, तो हम पे भी दुआ आएगी ऊपर वालों से. बहुत बढ़िया कंपनी है, इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, एंड दे आर नोन for being completely safe, one of the finest. In fact, we are doing lots of things other than just being a partner. We are looking at whether we can help even the departments here to tie up with them so that security is taken care of, for which they are very popular. Yeah, I think a lot will come through when talking to all these people, also including Arshdeep and Shreyas with. Hi, good afternoon. So it's an exciting time for all of us at CP Plus to be associated with Punjab Kings. I'm sure all of you must have heard of CP Plus. At CP, we are all about scale, innovation, and we believe in securing everything that matters. We have invested deeply into tech, R&D, localization, and in fact, we are one of the India's largest factory and the 3rd largest factory in South. And we are the number 1 in market share in India. And as you grow more bigger, you want to dream of bigger things, get associated with the fans, with passion. And that's why Punjab Kings. And for us, the Punjab Kings represents passion, resilience, a never say die attitude. I mean, last year they were almost there. They were runners up, I think missed the cup by about 6 runs. And I'm sure this is the year for them. And we hope that we'll be able to lift the trophy together this time. And one thing we can say for sure is, he was mentioning, the whole world's eyes will be on you this year. And our tagline, I think, is apt for it. Upar wala sab dekh raha hai. And it's not just 2 brands coming together. It's about our shared passions, shared commitments. And we see this going on for a long while. And let's build something together. Congratulations. The moment we all have been waiting for, ladies and gentlemen, and now I request Shreyas to present the official jersey to Mr. Anav Nair. And for this moment, I would like to request all of you to please join us with your applauses. आप सभी ने अपनी तालियों के साथ हमें join करना है. And I request Arshdeep to present the jersey to Mr. Sanjay Gobia. We have to clap with a beat. Come on, everyone. Ladies and gentlemen, we are presenting the